ले चल मुझे. That's such a heavy anointing, brother. On the ले चल मुझे. तू है जहाँ, है जहाँ. Where I am, there my servant will be also, says the Lord. परमेश्वर कहता है कि जहाँ मैं हूँ मेरा ले दास भी चल होगा. मुझे. ले चल मुझे Yes. मैं तेरे पास आता हूँ. सिंहासन के पास ले चल मुझे. मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से. आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से. मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से. आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से. You know, lady, when I see in the spirit, और मैं जब आत्मा में देख रहा हूँ, you know, I saw something. I don't know whether there is how to describe this. There is a spirit of confusion in your family. और गड़बड़ी और उलझन की दुरात्मा आपके Like, परिवार I में don't know how है. to say this, because there are some misunderstanding, heavy misunderstanding over there. There was a fight. I'm trying to understand. I know you are coming here for the first time. और आपके घर में कोई गलतफहमी है, झगड़े होते हैं, I don't know. मुझे नहीं Because पता. I saw a table that was overturned. और क्योंकि मैंने देखा कि एक जो टेबल है वो उल्टा Now किया जा रहा है. God says, I shall prepare a table before you in the presence of my enemies. और परमेश्वर का वचन कहता है कि दुश्मनों के सामने वो मेरी मेज बिछाएगा. But this table is not in the right position. पर ये जो टेबल है वो सही तरीके से नहीं रखा गया That is है. why your enemies have the upper hand in your life. और इसीलिए शैतान का राज आपके जीवन पर चल रहा है. The Lord is saying to you today पर प्रभु आपसे आज कह रहे that हैं, because you came over here, पर क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं your table is going to be strengthened out. और आपका Straightened जो out. टेबल है वो सीधा किया जाएगा. You shall have fellowship with the Lord. और आपकी जो संगति होगी वो And प्रभु not के साथ only होगी. fellowship with the Lord, you shall have, your family members shall sit at the table and eat, says the Spirit of God. और परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उसी टेबल पर बैठकर आपके परिवार के लोग खाएंगे. It is happening. और ये हो रहा है. It is happening right ये हो now. रहा है अभी. There is a bondage that is, your right leg. Your right leg. आपका The Lord दायां is पैर, healing your right leg. प्रभु आपके दाएं पैर को चंगा There कर रहा is है. some issue in your right leg. आपके दाएं पैर में कुछ तकलीफ है. I do not know whether it's a circulation problem or what. There is a problem in your leg that God is healing right और now. आपके पैर में ऐसी कोई तकलीफ है जो प्रभु आपको चंगा कर रहा है. It started with your ankle. और इसकी जो शुरुआत है आपके एड़ियों से हुई I'm थी. running a scan in the spirit right now. और मैं आत्मा में स्कैन कर रहा हूँ. It started on your ankle. और Sorry. इसकी जो शुरुआत थी वो आपके पैरों के एड़ियों से हुई. And that pain started moving towards upwards. और ये जो दर्द है वो ऊपर की तरफ पड़ने And the लगा. Lord says, I am sending the healing angel and touching your leg right और now. परमेश्वर कह रहा है कि मैं चंगाई के स्वर्गदूत को भेजकर तुम्हारे Sorry? पैरों को छू रहा हूँ. I don't know, ma'am. I've never seen you in my life. I'm bringing all these things from the realm of the spirit. और आत्मा के आयाम से ये And सारी today, बातें आपको because बता I रहा have to हूँ. prepare for Dubai on Friday, so let me go a little wide. Hallelujah. Then I have to go to Delhi. So I'm just bringing everything out today. I'm bringing the big guns today. In the name of Jesus. Then I went to stood in the month of January. और फिर मैं जनवरी के महीने में ठहरा And the था. Holy Spirit said, tell this precious daughter of mine that January is a month that is so important in this family. और पवित्र आत्मा ने कहा कि इस बेटी से कहना कि जनवरी का महीना आपके परिवार के में बहुत ही महत्वपूर्ण है. And the Holy Spirit is also saying right now और पवित्र आत्मा ये भी कह रहा है that I see like you have a revelation of giving to the Lord. और मैं देख रहा हूँ कि प्रभु को देने का प्रकाशन आपके पास Though है. your seed was small or big, that doesn't matter. See, चाहे आपका बीज या आपकी रकम छोटी या बड़ी हो. still I'm speaking. Yes.
Prophesy, man of God. Yes. She's not I speaking. receive, I receive. You receive or you don't receive. You have to receive. Hallelujah. That's what I'm saying. I'm bringing out the big What you guns. are saying is correct, what you said. This is how I have to prophesy. और इस A तरीके day will come when the drums will hit and everything will hit, and it will be every maddening over here. But I have to, as if like I'm speaking and the person is not listening. Yes. Do you know everybody called Maggie? आप किसी को जानते हैं जिसका नाम मैगी है? नहीं. What's your name? Sandra. I'm seeing Maggie or Maggie, something like this. What is M-A-G? M-A-G-A something. Maggie. Thank you, Lord. Do you have a daughter? क्या आपकी कोई बेटी है? Come on, fast. What's her name? Pastor, my pet name is Maggie. No, you were asking now, that's why I didn't say anything. It's okay. Also, Pastor, the No, person I don't want to. You're not my Holy Spirit. I told you I'm bringing the big guns. It is not your real name. No, my real name is Margaret. That's again you said it, Pastor. Is it? Oh, Jesus. Same M-A-R-G. Jesus. So you're okay. It's okay. Don't speak. I will still prophesy. So I have to shift. Do you know the anointing is shifting now? She's saying yes. If a prophet came to you, never let that man move from you. May the hand of God be upon your life. और प्रभु का हाथ आपके जीवन पर आए You don't know how precious is the prophetic anointing. और भविष्यवाणी का जो अभिषेक है वो बहुत ही कीमती है. The Lord sees you. और Hallelujah. प्रभु आपको देखता है. Praying in your closet. जहाँ पे आप कमरे में बंद होकर प्रार्थना कर Praying रहे in your हैं. closet. आप कमरे में बंद करके The Lord प्रार्थना has seen करती your हैं. private devotion life right now. और आपने जो निजी तौर से प्रभु की आराधना की है परमेश्वर ने देखा है. And because of your faith, और आप the faith that was in your grandmother Lois, that faith will be transmitted to your children, says the Spirit of the और Lord. परमेश्वर का आत्मा कहता है जो विश्वास okay. तुम्हारी माँ और नानी में था वही विश्वास बच्चों में आएगा. At least you can, okay, don't close your eyes. Open your eyes. It's open your eyes. Generation curse in my husband's family. Really? And how do you know that? Yeah, because his father was drinking, my husband also was drinking. Now my son is drinking Really? alcohol and tobacco. I break that curse. If you would listen to me, it will break today in Jesus' name. Pastor, you said that about enemy about her. She confirms saying that she have got enemies in her workplace, Pastor. You know, I told her something, she did not even reply. I told your table is fallen. Your table is, there is so much of confusion in your family, and you're telling me about generational curses and this. Yes, and that. Pastor, again There is a fights in your house. Yes, she confirms that her family all are separated here and there. Nowadays, they started to come together to have food in their house. Like Today, do you want the table? Table is the place where everything happens. Your table is coming back in Jesus' और name. परमेश्वर आपके टेबल को फिर से खड़ा कर रहा है यीशु के नाम में. If you open your mouth, I will speak. अगर आप अपना मुंह खोलेंगे तो मैं और भविष्यवाणी करूंगी. Jeremiah, what do you see? Jeremiah, don't keep your mouth shut. और यार मैं तुम क्या देख रहे हो अपना मुंह बंद मत रखना. and again, you spoke about the offering, Pastor. She says that she always give offering wherever she goes, Pastor. I told her seed is small. और मैंने कहा कि इनका बीज छोटा God है. doesn't see your seed. God sees the heart behind the seed. And He will bless and honor you. और परमेश्वर आपको आशीर्वादित करेगा, Maggie. आपका सम्मान करेगा. Maggie. You shall rise. Your children shall be mighty, says the Spirit of the Lord. परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपके बच्चे सामर्थ्यशाली होंगे. In the name of Jesus, God has honored your faith in the name of Jesus. प्रभु ने आपके विश्वास Your का सम्मान private किया है. prayers will win public wars. जो आपने निजी तौर से प्रार्थना की है खुलेआम आप जीत हासिल करेंगी. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Pastor, you called out the name Maggie. Maggie, I picked her up and said, "You are Maggie." Yeah, Yes. Maggie. This sister's pet name is Maggie. और इनका I don't घर know का pet नाम name. मैगी Jesus है. knows pet names. And you also said M-A-R-G. Hey, और आपने MARG भी Her कहा. real name is Margaret. और इनका असली नाम मार्गरेट है. You I don't also know. saw her
praying in the closet. Yeah. और Yes, आपने she's a देखा woman कि of ये prayer, बंद कमरे में प्रार्थना कर रही है The sister confirms that she rocks her room and she prays for long hours. और ये Yes, बहन she's a कहती woman है of कि मैं prayer. अपना कमरा बंद करके घंटों घंटों प्रार्थना I करती हूँ saw her praying. Yes, Pastor. And she confirms whatever you said, everything is right. Today is prophetic. और आज Hallelujah. भविष्यवाणी की सभा Today है is prophetic Wednesday. Hallelujah. आज भविष्यवाणी Hallelujah. की Can I सभा है। prophesy? Prophesy, Yes, man of God. prophesy. Today I Man of decree and God. declare in the name of Jesus. और आज मैं घोषणा करता हूँ ऐलान करता हूँ यीशु के That नाम which में God has prepared for you shall Amen, manifest amen, today amen, in the amen. name of Jesus. और जो कुछ परमेश्वर ने Yes. आपके लिए तैयार रखा है वो आज प्रकट होगा What यीशु के नाम God has में prepared for you, that begin to Amen, manifest from amen, today amen, onwards amen, in the amen. name of Jesus. जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए तैयार Yes. रखा है आज से वो चीजें This दिखाई is देना a शुरू होंगी prophetic यीशु के नाम word for you. में और ये भविष्यवाणी वाला वचन Receive आपके it लिए in Jesus' है उसे name. ग्रहण कीजिए यीशु God के is नाम healing में somebody's mouth. In Jesus' name. यीशु के Yes. नाम में God's people said, आमेन give Jesus a shout of और praise and यीशु say के लिए hallelujah. जोरदार ताली बजाकर कहिए हालेलुया